नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए वीजे ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वैभव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन करेंगे प्रोसेस एंड द प्रोसेस स्टेट डायग्राम। चलिए शुरू करते हैं। First of all, we study what is the process. Process means program under execution. जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कहेंगे अपन प्रोसेस. इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन अ सीक्वेंशियल फैशन. जो भी हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो सीक्वेंशियल फॉर्म में एग्जीक्यूट हो. Let's take example. There is a text file. Whenever program is executing in the main memory, then it is called process. A process is a well defined as an entity which represent the basic unit of work to be implemented in the system. अब जो भी अपना प्रोसेस होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वर्क की, एंड इट इज इंडिविजुअली शेड्यूलेबल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. सो our next topic is process state diagram. Okay, in this there are few stages. Number 1 is new, number 2 is ready, running, waiting, and last one is terminated. New state. In this state the process is being created. इस स्टेट में क्या होता है, जो भी अपना प्रोसेस होता है वो क्रिएट होता है. नंबर सेकंड इज रेडी. द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू द प्रोसेसर. इन दिस process is ready to execute but waiting for a CPU to execute. In this more than one process are there. Number third is running. In this instructions are being executed. When the process is running under the CPU, in this state only one process is being executed. Next is waiting. The process is waiting for some event to occur such as input-output completion or the reception of the signal. Okay, now next is terminated. In this the process has finished the execution. After the completion of a process automatically terminated by the CPU is called the terminated state. Now recall the process state diagram. न्यू से रेडी स्टेट में जाएगा वो एडमिटेड हो जाएगा. रेडी से रनिंग स्टेट में जाएगा वो शेड्यूल हो जाएगा. अगर रनिंग स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगा. डेट इज कॉल्ड इंटरप्शन. सो फ्रॉम रनिंग द प्रोसेस कैन ऑल्सो एंटर इन टू द वेटिंग स्टेट. And from waiting state process also go to the ready state, and when the process is completed it has been terminated. Running state से exit हो जाएगा and terminate हो जाएगा. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन. सो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे PCB, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड थ्रेड्स. थैंक यू.